28th October 2016. Editorial: Modern Agriculture Land Leasing Act 2016. Some observations. Summary. An expert panel appointed by Niti Aayog submitted its recommendations in April 2016 to create a model law to formalize leasing of agricultural land. नीति आयोग द्वारा एक्सपर्ट पैनल ने सबमिट की है रिकमेंडेशंस टू क्रिएट मॉडल लॉ फॉर्मल वे में लीजिंग हो सके. Besides reviewing existing agriculture tenancy law of states, the expert committee had to suggest appropriate amendments with a view to legalize and liberalize land leasing and, more importantly, to prepare a model act. After consultations with state, farmers, associations and civil societies, in the final report, the committee has provided a model agricultural land leasing act. Currently, land ownership in India is recognized through the Registration Act of 1908, but on strictly technical terms. This act only records the selling and buying of lands and doesn't indicate ownership. As of now, most state governments have either legally banned or imposed various restrictions on agricultural land leasing. States से कंसल्टेशन करने के बाद फार्मर एसोसिएशंस एंड सिविल सोसाइटीज़ प्रोवाइड की है मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट. अभी लैंड ओनरशिप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार डिफाइंड है इंडिया में. इसमें सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड्स है, ना कि ओनरशिप. बहुत से स्टेट्स गवर्नमेंट ने लीगली बैन या रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करवा दिए हैं ऑन एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फैलो लैंड ऑपरेशन में आएगी. इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अच्छा होगा. जो फार्मर फार्मिंग में एंगेज नहीं होना चाहते वो भी अपनी लैंड प्रोडक्टिव यूज़ में आएगी. कुछ मीनिंग समझ लेते हैं. लीज़, LEASE. लीज़ होता है ग्रांट, प्रॉपर्टी ऑन लीज, रेंट और लेट. टेनेंट होता है अ पर्सन हु ऑक्यूपाइज लैंड, जिसने ऑक्यूपाई की है लैंड, प्रॉपर्टी रेंटेड फ्रॉम अ लैंडलॉर्ड. लेसी कौन होता है? अ पर्सन हु होल्ड्स द लीज ऑफ प्रॉपर्टी, अ टेनेंट. व्हाई अ लॉ इन दिस रिगार्ड इज नेसेसरी? इस लॉ की क्यों जरूरत पड़ी? एब्सेंस ऑफ अ साउंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फैसिलिटेटिंग लैंड लीजिंग had been viewed as a major obstacle for private investment in agriculture, resulting in poor productivity. हमारे यहाँ साउंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है फॉर लैंड लीजिंग फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिससे पुअर प्रोडक्टिविटी रहती है. ड्यू टू लैक ऑफ एनी लीगल फ्रेमवर्क फॉर लीजिंग, द इनफॉर्मल टेनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड हैव इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री being deprived access to institutional credit, disaster relief and other support services. कोई legal framework नहीं है for leasing. जो informal tenants होते हैं उनको institutional credit, disaster relief और other support services नहीं मिल पाती. The situation where beneficiaries of agriculture support services have been the landowners and not the actual tenants has fueled problems of farmer suicide, default on agriculture loans among others. एग्रीकल्चर सपोर्ट सर्विसेज के बेनिफिशरीज लैंड ओनर हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअल टिलर्स, जो कि खेत जोतने वाले होते हैं. इन्हीं कारणों से फार्मर सुसाइड्स होती है, एग्रीकल्चर लोन्स में डिफ़ॉल्ट होना, बहुत से प्रॉब्लम्स आती हैं. Besides, tenancy laws differ from state to state. Also, agricultural land leasing has hitherto been informal due to legal restrictions imposed by some states, and these restrictions have affected agriculture productivity growth. Agriculture support कुछ स्टेट में restrictions बहुत ज़्यादा हैं related to agriculture land leasing, जो कि बहुत informal है. इन restrictions के कारण इससे productivity में असर पड़ता है. Besides, tenancy laws differ from state to state. Laws in some states are generally very restrictive in the sense that they had almost prohibited agriculture tenancy. Such restrictive tenancy laws of state had adversely affected agriculture efficiency, equity, occupational diversification,
and rapid rural transformation. टेनेंसी लॉ भी अलग अलग होते हैं हर स्टेट में. कुछ जगह रेस्ट्रिक्टिव होते हैं, जैसे प्रोहिबिट कर देना एग्रीकल्चर टेनेंसी को. ये लॉ अफेक्ट करते हैं एडवर्सली एफिशिएंसी एग्रीकल्चर की, इक्विटी, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन या रैपिड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता. मेन फीचर्स ऑफ द प्रपोज्ड मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016. Legalize land leasing, which will promote agricultural efficiency, equity, poverty reduction, agriculture productivity and rapid rural change. Land leasing को legalize करने से एग्रीकल्चर एफिशिएंसी होगी, इक्विटी, पोवर्टी कम होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड रूरल चेंज जल्दी आएगा. दिस इज टू इंश्योर कंप्लीट सिक्योरिटी ऑफ लैंड ओनरशिप right for landowners and security of tenure for tenants for the agreed lease period. Owner of land में complete security देखने मिलेगी, tenants के tenure में security होगी agreed lease period होने के कारण. It will remove the clause of adverse possession of land in the land laws of various states as it interferes with the free functioning of land लीज मार्केट. गलत तरीके से जो लैंड पोजीशन में रखते हैं वो हटेंगे. ये हमारे फ्री फंक्शनिंग ऑफ लैंड लीज मार्केट में बाधक बनते हैं. अलाउ ऑटोमेटिक रिजम्पशन ऑफ लैंड आफ्टर द एग्रीड लीज पीरियड विदाउट रिक्वायरिंग एनी मिनिमम एरिया ऑफ ए लैंड टू बी लेफ्ट विद द टेनेंट इवन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी. अलाउ करना चाहिए ऑटोमेटिक रिजम्पशन. रिजम्पशन का मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ बिगिनिंग समथिंग अगेन आफ्टर अ पॉज और इंटरप्शन. एग्रीड लीज पीरियड के ख़त्म होने के बाद विदाउट इसकी ज़रूरत के मिनिमम एरिया ऑफ लैंड टेनेंट के पास रहे टेनेंसी के ख़त्म होने के बाद. अलाउ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लीज टू बी डिटरमाइंड म्यूचुअली बाय द लैंड ओनर एंड द टेनेंट विदाउट एनी फियर ऑन द पार्ट ऑफ द लैंड ओनर ऑफ लूजिंग लैंड राइट्स. टर्म्स एंड कंडीशंस म्यूचुअली बने लैंड ओनर एंड टेनेंट दोनों के द्वारा. ये डर न रहे कि लैंड ओनर को कि वो अपने लैंड राइट्स खो देगा. फैसिलिटेट ऑल टेनेंट्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स टू एक्सेस इंश्योरेंस बैंक क्रेडिट एंड बैंक क्रेडिट अगेंस्ट प्लेजिंग ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट. सभी टेनेंट्स शेयर क्रॉपर्स को मिला के इंश्योरेंस बैंक क्रेडिट एंड बैंक क्रेडिट की सुविधा मिलेगी अगेंस्ट प्लेजिंग ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट. Incentivize tenants to make investment in land improvement and also entitle them to get back the unused value of investment at the time of termination of tenancy. Land के improvement में tenants को invest करना चाहिए ताकि उन्हें tenancy के ख़त्म होने के बाद unused value of investment मिल सके. Why it is so special? The act will also allow leasing of land for the purpose of agriculture and allied activities for a specified period and as per mutual agreement between landowner and lessee cultivators. Agriculture and allied activities encompasses the raising of crops including food and non-food crops, fodder or grass, fruits and vegetables, flowers, any other horticultural crops and plantation, animal husbandry and dairy, poultry farming, stock breeding, fishery, agroforestry, agro-processing and other related activities by farmers and farmer groups. Land lease पे मिलेगी तो एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड एक्टिविटीज़ दूसरी एक्टिविटीज़ भी होंगी. म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन लैंड ओनर एंड लेसी जो लीज लैंड ऑक्यूपाई कर रहा है उन दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा. फूड प्लस नॉन फूड क्रॉप्स बढ़ेंगे. मेजर बेनिफिट होगा लेसी कल्टीवेटर्स को होगा जो हकदार होंगे लोन्स, क्रॉप इंश्योरेंस, डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड कराएगा स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर यूज ऑफ lease in land. Further, the major benefit expected from the act would be to lessee cultivators as they would be entitled to obtain loans, crop insurance, disaster relief or any other related benefits or facilities provided to farmers by the state or central government based on their agricultural use of the leased in land. Limitations in the proposed act. The Model Leasing Act, if adopted in the proposed form, may encourage the diversion of agricultural land from crop cultivation to commercial use
because it allows leasing of agricultural land for activities like plantation crops, animal husbandry, and dairy, etc., in addition to crop cultivation. Once agricultural land is transferred to allied activities, it will not only reduce the total land stock available for crop cultivation with an adverse impact on production of field crops, but it would also change the land use pattern, if not permanently, at least for a very long period. Proposed form encourage करेगा diversion of agricultural land from crop to commercial use. अगर ऐसा हुआ तो total land stock कम हो जाएगा, impact पड़ेगा production of field crops पे, land use pattern भी change हो जाएगा. There is also no clarity on the definition of lessee cultivators. The Modern Leasing Act defines a lessee cultivator as a person who leases in agricultural land. It is not clear whether corporates and absentee landlords willing to manage cultivation through their employees, representatives can be allowed to lease in agricultural land, or the leasing should be restricted to farmers group of cultivators including landless cultivators. Lessee cultivator की definition clear नहीं है, बस बोला गया है कि जो leases agricultural land corporate या absentee landlord करेगा willing to manage through their employees, ये कोई क्लियर बात नहीं है. Whether contract farming particularly by corporates should also fall under the purview of proposed Modern Leasing Act. There should not be any problem in leasing of agricultural lands by corporates if land use is restricted to cultivation of agricultural crops only, since the leasing in by corporates may lead to increased flow of investment to the agriculture sector. However, such contracts would affect the food security in the country if choice of crops is solely motivated by profit. क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कॉर्पोरेट्स करते हैं वो भी इसके अंदर आएगा या नहीं, ये क्लियर नहीं है. कॉर्पोरेट्स अगर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फ्लो करेगा एग्रीकल्चर में, फूड सिक्योरिटी पे असर पड़ सकता है अगर सिर्फ प्रॉफिट मोटिव हो. ऑल्सो वरीसम इज अलाउइंग लीज कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द पार्टीज फॉर एन indefinite period, and that the government shall not fix a minimum or maximum lease period. It would also increase the risk of any influence pressure on the lessor to lease out the land for a very long period, and it might become very difficult for the survivors in the family to resume operating the land from an influential lessee. Thus, if the government does not fix maximum lease period, it will increase the risk of losing the contracted land permanently from food crops. ध्यान देने वाली बात ये भी है कि लीज कॉन्ट्रैक्ट्स का इंडेफिनिट पीरियड के लिए होना और गवर्नमेंट का मैक्सिमम मिनिमम लीज पीरियड का फिक्स ना होना. प्रेशर बढ़ने का मीनिंग है ऑन लेसर टू लीज आउट लैंड फॉर लॉन्ग टाइम तक देने के लिए लेसर के ऊपर प्रेशर हो सकता है. अगर मैक्सिमम लीज पीरियड फिक्स ना हुआ तो रिस्क ज़्यादा रहेगा of losing the contracted land. The Modern Leasing Act though provides for lessors to resume the land if any damage to the soil health is done by the lessee. It does not clearly define what constitutes damage to soil health. It is felt that interpreting that damage to soil health would vary from person to person, and it may give rise to disputes between the lessors and lessee. Provides lessors to resume the land अगर कोई soil health में damage पाया जाता है लेसी के द्वारा. डैमेज सॉइल हेल्थ क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये पूरी तरीके से इसमें डिफाइन नहीं है. ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, इससे लेसर्स और लेसी के बीच डिस्प्यूट रह सकता है. द मॉडर्न लीजिंग एक्ट ऑल्सो अलाउज लेसीज टू बिल्ड स्ट्रक्चर्स और एनी फिक्चर्स ऑन द लैंड विद परमिशन फ्रॉम द लेसर. These ambiguous provisions are not any better than the existing system in terms of its provisions to improve security of the tenant. Therefore, in all likelihood, it would reduce the incentive for tenants to step up investment and improve land productivity. Lessors को ये छूट है कि वो कोई structure बना सकता है on land with permission from lessor. ये reduce करेगा incentive for tenants जिससे investment या land productivity बढ़े. The Modern Leasing Act proposes schemata of addressing the issue of change of land ownership inimical to the interest of both landlords and tenants. Once the ownership of the land is changed on account of sale or gift,
lease contract may be terminated unless the new landlord and lessee agrees to continue the contract for the rest of the agreed period. Proposed plan जो change of land ownership को लेके बनाया गया है is harmful of both landlords and tenants. अगर एक बार ownership of land change हो जाती है या सेल या गिफ्ट, लीज कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा. जब तक नया लैंडलॉर्ड या लेसी एग्री नहीं करते तो कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे हम समझ लेते हैं स्कीमेटा का मीनिंग होता है अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लान और अ थ्योरी इन फॉर्म ऑफ एन आउटलाइन और मॉडल. इनिमिकल का मतलब होता है टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म अनफ्रेंडली. द एक्ट इज ऑल्सो साइलेंट ऑन वेदर अ लैंड ऑलरेडी अंडर लीज एग्रीमेंट कैन बी मॉर्गेज्ड और नॉट, keeping in view that the lessee might be interested in availing crop loans or term loans in case of allied activities. ये एक्ट साइलेंट है कि लैंड जो लीज एग्रीमेंट में है क्या वो गिरवी रख सकते हैं या नहीं. While dealing with termination of lease, the Model Leasing Act has blatantly ignored why lessor should not terminate lease contract if the lessee keeps or intends to keep the contracted land fallow in a normal case due to his loss of interest in cultivation. Keeping a cultivable land fallow defeats the very purpose of enacting the Land Leasing Act, which aims at ensuring productive and optimum use of scarce resources. Termination of Lease Act ने इग्नोर किया है क्योंकि लेसर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं टर्मिनेट करना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टेड लैंड को फैलो लैंड रखना चाहिए अगर कल्टीवेशन में इंटरेस्ट ना हो तो. कल्टिवेबल लैंड का फैलो रखना लैंड लीजिंग एक्ट के पर्पस को खत्म करता है क्योंकि इसका मेन पर्पस है प्रोडक्टिव यूज ऑफ ऑप्टिमल रिसोर्सेज. व्हाई इज इट बीइंग अपोज्ड बाय फार्मर activists? Farmers activists across India have strongly advocated not allowing the usage of agricultural land for industrial purposes. They say agricultural land should not be given to corporate houses in their name. There should be a viable ceiling on land to be given on lease, and it should be given only to landless agricultural laborers or unemployed youths at the household level. The ceiling on land should be such that it can provide a good living for a household. Otherwise, there is a danger of this land being transferred to corporate houses, which can prove disastrous for the food security of this country. Also, activists say grazing lands for animals should not be allowed at any cost to be given or lease in the name of fallow land. Grazing land is very crucial for a village and it should be reserved for livestock only. तो इसमें ये कहा गया है यूसेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर इंडिविजुअल पर्पस होना चाहिए. इसको शुड नॉट बी यूज्ड गिवन और टू इन्हें कॉर्पोरेट हाउसेस को नहीं देना चाहिए. वायबल सीलिंग होनी चाहिए लैंड की एंड सीलिंग ऑन लैंड जो है प्रोवाइड करना चाहिए गुड लिविंग फॉर हाउस होल्ड. अदरवाइज कॉर्पोरेट को जाने का डर रहेगा लैंड को. ये जो लैंड है वो गिवन ओनली टू लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स को देनी चाहिए और अनएम्प्लॉयड यूथ एट हाउस होल्ड लेवल. एंड ग्रेजिंग लैंड शुड बी रिजर्व फॉर लाइफ स्टॉक ओनली. तो कंक्लूजन ये है, overall the Model Leasing Act aims to benefit both lessors who prefer to enter into a lease agreement without the fear of losing ownership rights and lessees who require protection from premature termination of lease contracts. No doubt, legalizing the tenancy will result in better productivity of crops grown on the contracted land by replacing an unwilling cultivator with a willing cultivator, provided the contracted land remains to be used for cultivation of field crops only. However, the Model Leasing Act appears to be lopsided and seems to be giving an edge to the lessees over the landlords. Also, allowing the contracted land to be used for activities other than crop production, that too for an indefinite period, would certainly threaten the food security of the country in the long run. These issues should be taken up for the further consideration by the Niti Aayog so that a balanced and more acceptable model would come into force. Thank you.